Hello everyone, this video is for grade 1st. Let us start. This sheet is divided into 3 different parts. So, we have 3 different sections in this sheet, in which we will learn about 3 different subjects: English, Maths and EVS. We will learn about 3 different subjects: English, Math and EVS. Let us start with our first subject, English. Question is, use the describing words from the word bank to complete the sentences. What we have to do is, we have to use describing words, means adjectives. What are describing words? Adjectives are called describing words which are used to describe a noun or a pronoun. So what we have to do, हमें क्या करना है, इन हेल्प बॉक्स में से, इस वर्ड बैंक में से वर्ड्स को पिकअप करके सेंटेंसेस में फिल करके उन्हें कंप्लीट करना है. ओके, या द बॉटल इज, द फर्स्ट सेंटेंस इज द बॉटल इज empty. E M P T Y, empty. Empty means khali. The bottle is empty. Okay, क्या लिखा है? Empty. EMPTY. But don't do this mistake to pronunciate it as empty. Okay, empty नहीं होता है, इसको ऐसे pronunciate नहीं करते. यहाँ बीच में P लगा है, so you will pronunciate it as empty. So कैसे आप pronunciate करेंगे? Empty. P will be silent. It will be empty. The bottle is empty. The bottle is empty. Now, see the second sentence. I have bought a new toy. I have bought a new toy. मैंने एक नया खिलौना खरीदा है. I have bought a new toy. New मतलब नया. It is also describing words. So, this word bank is full of describing words, means it is full of adjectives. I am scared of wild animals. मैं जंगली जानवरों से डरती हूँ. I am scared of wild animals. Now, in this way, you have to fill rest of these sentences with describing words. Okay, बाकी sentences को describing words से fill करके complete करना है. Let's move to our next section, which is of maths. The question is, color the boxes having odd number with yellow crayon and boxes having even number with orange crayon. जिस भी बॉक्स में ऑड नंबर होगा उसे येलो से कलर करना है, और जिसमें इवन नंबर होगा उसे ऑरेंज से कलर करना है. So get ready and take out your crayons and be ready to color these. But before that, let us talk about odd and even. What is odd and what is even? Odd और even क्या है, ये समझाते हैं. Odd are those numbers which cannot be divided by 2, and even are those which can be divided by 2. Means every second number is even number. हर दूसरा number even number होता है. Like 2, 4, 6, 8, 0, 0, 2, 4, 8 and 6. All these
numbers means every second number, हर दूसरा number like 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30. ये सब क्या है? ये सारे हैं even numbers. So you have to color even number with orange. हर even number को orange कलर करना है और odd number को yellow कलर करना है. Let's start. 33. It is a odd number. ये क्या है? एक odd number है. So we will color it with yellow. येलो क्रेयॉन से कलर करेंगे. कलर इट विथ येलो. सेकेंड नंबर इज 78. 78. सो कलर इट विथ ऑरेंज. इट इज इवन नंबर. ये क्या है? इवन नंबर है. सो वी विल कलर इट विथ ऑरेंज कलर. Understood? 42. It is also a even number. ये भी even number है. So we will color it with orange. इसे भी orange color करेंगे. 65. This is odd number. So we will color it with yellow. What we will do? We will color it with yellow. 50. 50. It is even number. ये क्या है? Even number है. So we will color it with orange. इसमें क्या करना है आपको? We have to color odd number with yellow and even number with orange. Now let's move to our last section of EVS. Question is, आइडेंटिफाई द पार्ट्स ऑफ द प्लांट. प्लांट के पार्ट्स को आइडेंटिफाई करना है. हिंट दिया है, उसे पढ़ के हमें समझना है कि ये कौन से पार्ट के बारे में है. फर्स्ट वन, प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट. विच पार्ट प्रिपेयर्स फूड फॉर द प्लांट? थिंक. Leaves. Yes, very good. Leaves prepare food for the plant. Leaves prepare food for the plant. So the answer will be leaves. L-E-A-V-E-S. Leaves. मतलब पत्तियां. Second is absorb वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. कौन सा पार्ट और वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है? थिंक. रूट्स. रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. रूट्स क्या करते हैं? वाटर्स और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं और फिर उन्हें शूट सिस्टम यानी कि स्टेम में ट्रांसफर करते हैं और स्टेम के थ्रू वो सारे ब्रांचेस और लीव्स तक पहुंचता है. द थर्ड वन, होल्ड द प्लांट अपराइट. प्लांट को स्ट्रेट खड़ा रखने में क्या हेल्प करता है? होल्ड्स द प्लांट अपराइट. स्टेम. यस, stem holds the plant upright. So in this way you have to read these hints, understand it, and then you will automatically identify that which part it is, कि ये फिर कौन सा part है. And the last question, draw and color a plant. एक plant की picture draw करनी है और उसको color करना. How many parts does a plant have? एक plant के कितने parts होते हैं? Roots, stem, leaves, fruit, flower, seed, leaves,
All these are the parts of plant. So you have to draw a plant and color it. You have to color it. So I hope you all have understood this sheet very well. If you still have any kind of doubt, any question, you can ask me. Thank you.